Today, in this class, we have to study about the mitochondria. Mitochondria, singular mitochondrion. Mitochondrion is singular form, mitochondria प्लूरल फॉर्म. लास्ट क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी किया है. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसके बारे में स्टडी किया. अब इस क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करना है. माइटोकॉन्ड्रियन इज पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रियालाच मराठीमध्ये ऊर्जा निर्मिती केंद्र असं समजलं जातं. पेशीमधील ऊर्जा निर्मिती केंद्र म्हणजे माइटोकॉन्ड्रियन. Mitochondrion is powerhouse of cell. Why it is known as powerhouse of cell? Because energy molecules, energy currency of living being produced inside the mitochondria. Hence, mitochondrion is regarded as powerhouse of cell. जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटी होते रहते हैं, जितने भी प्रक्रिया होती रहती है, वो प्रक्रिया होते समय जो ऊर्जा लगती है, वो ऊर्जा का सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआत होता है. All activities of living being takes place by utilization of such type of energy molecules known as ATP. So greater number of ATP molecules produced in the mitochondrion. Mitochondrion is a double membraned cell organelle developed in the eukaryotic cell. जो पेशी विकसित हो गई है, उस पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होते रहते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहते नहीं. सच टाइप ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल organelle, mitochondria only developed in the eukaryotic cell. So mitochondria becomes site of aerobic respiration. Mitochondria are produced only in the eukaryotic cell. Mitochondrial number of mitochondria
In the eukaryotic cell, number of mitochondria varies. Variable number of mitochondria developed according to the place of cell or location of the cell in the multicellular body. जैसे कि मसल सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर रहते हैं, स्पर्म सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं. इन द स्पर्म सेल कॉमनली hundreds of mitochondria developed. Sperm cells, hundreds of mitochondria developed. In the muscle cell, muscle cell, 50 to 60 mitochondria developed. म्हणजे ज्या पेशी जास्त ऍक्टिव्हिटी दाखवतात, ज्या पेशी जास्त ऍक्टिव्ह आहेत, त्या पेशीमध्ये माइटोकॉन्ड्रियाची संख्या वाढत रहते. जिस सेल की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, जो सेल हमेशा कार्य करते रहते हैं, उस सेल में सबसे ज़्यादा संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की रहती है. म्हणून तर नेहमी म्हणतो, जो व्यक्ती नेहमी कार्य करत राहतो त्या व्यक्तीच्या प्रकृतीमध्ये पोटेन्शियलिटी जास्त असते, काम करण्याची पोटेन्शियलिटी जास्त असते. पण जो व्यक्ती कार्य चांगलं करतो, एक्सरसाइज मोठ्या प्रमाणात करतो, पण जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात एटीपी मॉलिक्यूल तयार झालेले आहेत, त्या एटीपीचा वापर योग्य ठिकाणी केला जात नाही. नको त्या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी करणे, नको त्या ठिकाणी बोलणे, नको त्या ठिकाणी ऊर्जेचा लॉस होतो आणि त्या व्यक्तीची पोटेन्शियलिटी कमी होते. सो सोर्स ऑफ एनर्जी करन्सी इज माइटोकॉन्ड्रिया, and that mitochondria should use properly in the living body. Activity should be managed and potentiality of the living body improve. आपण त्याची त्या ॲक्टिव्हिटीचे व्यवस्थापन केलं पाहिजे. तर एटीपी म्हणजे काय आहे? एटीपी is energy currency of living. ATP is energy currency of living. जसं नेहमी म्हणतो आपण की प्रत्येक सजीवामध्ये एटीपीच पाहिजे कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी. मग ती ग्रोथ असेल, रिप्रोडक्शन असेल, मेटाबॉलिझम असतील, चयापचय प्रक्रिया असेल. जैसे कि अपन एक्टिविटी करत रहते, जैसे कि हम बहुत सारे एक्टिविटी करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, वॉकिंग करते रहते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट कार्य करते रहते हैं. ये कार्य करते समय एटीपी का उपयोग होते रहता है. बहुत सारे एटीपी के यूज होते रहते हैं. सो ऑल एक्टिविटीज इन द लिविंग बीइंग परफॉर्म बाय यूटिलाइजेशन ऑफ
एटीपी। तो हमेशा कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो कौन सा मालिक है वो? तो है एटीपी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सबका मालिक एटीपी है। तो ये बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार होते रहते हैं। जितने माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ज्यादा है, ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। और ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल जब तैयार होते हैं तो शरीर की पोटेंशियलिटी, कार्य क्षमता बढ़ती रहती आहे। म्हणून मोठ्या प्रमाणात एटीपी तयार करण्यासाठी माइटोकॉन्ड्रियाची संख्या असणं आवश्यक आहे आणि एरोबिक रेस्पिरेशन होणं आवश्यक आहे। म्हणजेच ऑक्सिजन आतमध्ये घेतला पाहिजे जास्त प्रमाणामध्ये आणि आपण खाल्लेल्या अन्नाचं ब्रेकडाऊन होऊन ऊर्जा बाहेर पडते आणि त्या ऊर्जेचा वापर एटीपी तयार करण्यासाठी केला जातो। म्हणून एक्सरसाइज डेली करणं आवश्यक आहे, दररोज व्यायाम करणं आवश्यक आहे। व्यायाम केल्यामुळे ऑक्सिजनचा वापर होतो आणि माइटोकॉन्ड्रियाच्या आतमध्ये मोठ्या प्रमाणात एटीपी तयार होतात आणि मग आपली कार्यक्षमता वाढते। सो द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ द सेल इन द लिविंग बॉडी। मसल सेल में सबसे ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल रहते हैं। स्पर्म सेल में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रहते हैं। अशा प्रकारचे एटीपीचा नंबर हा त्या सेलच्या ॲक्टिव्हिटीवरती अवलंबून राहतो। शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, shape of the mitochondrion. The shape of the mitochondria depends on location of the cell. Common shape of the mitochondrion oval or cylindrical or the shape of the mitochondria may depends on the location of the cell in the body. मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का शेप चेंज होते रहता है बिकॉज मसल सेल्स आर कॉम्पैक्ट and greater number of mitochondria developed. So shape may be changed, but common shape is oval or cylindrical. Then the mitochondrial structure studied with the help of electron microscope, and structure is developed. That structure is known as ultrastructure of mitochondria. So we have to study in detail the ultrastructure of mitochondria. Ultrastructure of mitochondria. Ultrastructure. Ultrastructure of mitochondria. जी माइटोकॉन्ड्रियाची रचना इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने जेव्हा तयार केली जाते किंवा बघितली जाते त्या रचनेला अल्ट्रास्ट्रक्चर असं म्हटलं जातं। Mitochondrial structure observed under electron microscope, observed with the help of electron microscope, that structure is ultrastructure. So ultrastructure of mitochondria is showing double membraned structure, outer membrane
and inner membrane. Outer membrane is unfolded. Outer membrane of the mitochondrion is unfolded. बाहेरचं जे मायटोकॉन्ड्रियाचं पटल आहे ते पटल फोल्ड झालेलं नाही, त्याची कुठेही घडी पडलेली नाही किंवा त्या ठिकाणी फोल्ड झालेलं नाही. इनर मेम्ब्रेन ऑफ द मायटोकॉन्ड्रियम अंडरगो फोल्डिंग. अशा प्रकारचे मायटोकॉन्ड्रियाचा आतमधल्या मेम्ब्रेनचे असे फोल्ड झालेले आहे आणि म्हणून इनर मेम्ब्रेन ऑफ द मायटोकॉन्ड्रियम shows greater surface area due to holdings of the inner membrane. Inner membrane, outer membrane. This is the outer membrane of the mitochondrium. Outer membrane. Inner membrane of the mitochondrium. Inner membrane. बाहेरचं पटल आणि आतचं पटल. सीबीएसईच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं जी स्ट्रक्चर आहे, माहिती आहे, ते आपल्याला थोडं कमी प्रमाणात वाटते, पण अत्यंत महत्त्वाची आहे माहिती. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन शोज डिफरेंस. अब इसमें डिफरेंस क्या है? आउटर मेम्ब्रेन में फोल्ड नहीं है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड है. इन द inner membrane, so many finger-like projection may develop towards the inner side. So many invaginations, finger-like projections may develop inside. Each and every projection folds developed. These are the folds developed, known as cristae, singular crista. So many cristae may develop due to the infoldings of the inner membrane. And on the cristae towards the inner side, the stalked particles developed. These stalked particles are called F1 particles. F1 particles. Number of F1 particles developed on the inner surface of inner membrane, and the particles known as F1 particles. F1 particles. F1 particles. The F1 particles may also known as oxysomes. ऑक्सिसोम्स. आता या मधल्या मेम्ब्रेनची स्पेशालिटी अशी आहे की याच्यामध्ये F1 पार्टिकल्स निर्माण झालेले आहेत आणि हे F1 पार्टिकल्स
मोठ्या प्रमाणामध्ये एटीपी तयार करण्यासाठी मदत करतात. बाहेरचा मेम्ब्रेन का करत नाही एटीपी तयार करण्यासाठी मदत? मधला मेम्ब्रेन एटीपी तयार करण्यासाठी मदत करतो. त्याचं कारण आहे प्रोटीन कंटेंट इज ग्रेटर. फंक्शनल प्रोटीन्स developed in the inner membrane in the F1 particle molecule. दुसरा एक फरक आपल्याला लक्षात येतो. आउटर मेम्ब्रेन मध्ये प्रोटीन कंटेंट हे कमी आहे आणि मधल्या मेम्ब्रेन मध्ये प्रोटीनचं प्रमाण हे जास्त आहे. कारण या इनर मेम्ब्रेन मध्ये प्रोटीनचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं त्या प्रोटीनचा वापर होतो. एन्झाइम्स कोएन्झाइम्स डेव्हलप्ड इन दी F1 पार्टिकल्स. F1 पार्टिकलचं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं, each and every F1 particle has 3 parts such as head, stalk and base. Such type of 3 parts may observe of the F1 particle. In the head region of the F1 particles, number of enzymes are present. These enzymes help in the electron transport system. So here electron transport system is developed, ETS. Electron transport system is developed in the head region. Coenzymes, number of coenzymes developed in the head region of the F1 particles. These enzymes help in the aerobic respiration, electron transport system. Electron transport chain is developed in the head region. So greater number of ATP molecules produced on the inner membrane of the mitochondrion. यहाँ माइटोकॉन्ड्रियम के सरफेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टाक्ड पार्टिकल है. ये स्टाक्ड पार्टिकल्स एटीपी ज्यादा निर्माण करते रहते हैं. ग्रेटर नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन द हेड रीजन ऑफ द F1 particles. So surface increases in the inner membrane. Greater surface increases due to foldings and development of the F1 particles. And protein content is also greater in the inner membrane, and in the outer membrane less protein content is found. ये फर्क है. आउटर मेम्ब्रेन अनफोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है. सो F1 पार्टिकल में बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं और ये प्रोटीन एटीपी मॉलिक्यूल तैयार करने में भाग लेते हैं. नाउ द स्पेस एनक्लोज्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन, दैट स्पेस known as outer chamber. Outer chamber of the mitochondria. Outer chamber, जैसे कि हमने देखा है कि क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा स्पेस निर्माण हो गया है. 2 मेम्ब्रेन के अंदर, बिटवीन द मेम्ब्रेन, वहां पेरीप्लास्टिडल स्पेस ऐसा कहते हैं. यहां आउटर चेंबर ऐसा नाम दिया है. हे पहा, इथं माइटोकॉन्ड्रियाच्या 2 मेम्ब्रेन मध्ये जो स्पेस दिसतो त्याला आउटर चेंबर असं म्हटलं जातं. आणि या आउटर चेंबर मध्ये ॲक्वस फ्लुइड आहे. इन द
outer chamber, aqueous fluid is filled completely. यहाँ aqueous fluid है, जो outer space है, outer chamber है, उसमें aqueous fluid रहता है. Watery fluid, less diluted fluid, and the inner membrane enclose the space. Inner membrane enclose the space. That space enclosed by inner membrane known as inner chamber of mitochondria. This is the inner chamber of mitochondria. Inner chamber of mitochondria. Inner chamber. Here, inner chamber filled by special type of matrix of mitochondrion. Colloidal matrix of the mitochondrion is known as stroma of mitochondria. This is filled by stroma of mitochondria. Stroma. It is colloidal in nature. बहुत सारे कंपोनेंट या माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रोमा में रहते हैं. Living liquid contain different types of enzymes, protein molecules, RNA molecules, DNA molecules. Circular DNA is present in the stroma of the mitochondria. Circular DNA present in the mitochondrion, and the number of 70S ribosomes present in the matrix of the mitochondria. These 70S ribosomes remain attached to the mRNA during protein synthesis. So number of 70S ribosomes may also present in the mitochondria. 70S ribosome formed by 50S and 30S subunits and form 70S ribosome. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की. Chloroplast and mitochondria possess special features, that is presence of 70S ribosome and circular DNA. This is the characteristics of prokaryotic organism. So presence of 70S ribosome and circular DNA is the characteristics of prokaryotic organism. Hence, mitochondrion may also regarded as prokaryotic cell associated with the eukaryotic cell. So symbiotic association with the eukaryotic cell due to the presence of 70S ribosome and circular DNA. This is the circular DNA. This circular DNA may also known as plastidome. Circular DNA. So this circular DNA acts as chromosome of this mitochondrion. Because this DNA undergo transcription, and after transcription protein synthesis occur by translation process with the help of ribosomes and number of enzymes present in the stroma of the mitochondrion. So it is semi-autonomous, self-duplicating organelle is the mitochondria. ये स्पेशलिटी है माइटोकॉन्ड्रिया की. 70S राइबोसोम and circular DNA. Number of enzymes may also present in the stroma of the mitochondrion, and these enzymes help in the Krebs cycle.
TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, may developed or occur in the stroma of the mitochondrion. The stroma of the mitochondrion possess number of enzymes help in the Krebs cycle. So whole process of aerobic respiration takes place in the mitochondria, and number of ATP molecules produced, greater number of ATP molecule produced. So it is known as powerhouse of cell. Powerhouse of cell. It is known as powerhouse of the cell. म्हणून मी नेहमी म्हणतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण कार्य करत राहिलं, नेहमी आपली बॉडी ॲक्टिव्ह ठेवलं तर ऑक्सिजनचं कन्झ्युम्शन होतं मायटोकॉन्ड्रियाच्या साह्याने. मायटोकॉन्ड्रियाची संख्या वाढते आणि मायटोकॉन्ड्रियाची संख्या वाढली म्हणजे ATP तयार होतील आपल्या बॉडीमध्ये आणि काम करण्याची क्षमता सुद्धा वाढते. ॲक्टिव्ह सेल ठेवले आपल्या बॉडीमधल्या, नेहमी त्याचं युटिलायझेशन योग्य प्रमाणात युटिलायझेशन झालं की पूर्ण मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी सातत्यानं काम करत राहते आणि ATP मॉलिक्यूल जास्त प्रमाणामध्ये तयार होतील आणि पोटेन्शियलिटी वाढत राहते. सच टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर ऑब्झर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो इट इज नोन एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. लक्षात ठेवा, ध्यान दीजिए and remember regularly mitochondrial structure. The mitochondrion is a double membraned structure, double membraned cell organelle, outer membrane and inner membrane. The outer membrane and inner membrane, these membranes are semi-permeable membranes. Membranes are semi-permeable membranes, and the membranes are formed by lipid and proteins. Mitochondrial membrane. All membranes developed in the living body formed by lipid and protein. But here what happened? Protein content is different. यहाँ आउटर मेम्ब्रेन में लेस प्रोटीन है और इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रोटीन है. क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है इसलिए वहाँ प्रोटीन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटीन की संख्या ग्रेटर है. द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन नोन एज आउटर चेंबर, इट इज फिल्ड बाय वाटरी फ्लूइड, एंड द स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन known as inner chamber, it is filled by stroma or matrix of the mitochondria. या स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं, DNA है, RNA है. Here in the stroma Krebs cycle takes place. Krebs cycle or TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, is second step of aerobic respiration. Complete breakdown of the glucose molecule takes place in the stroma. That process is known as Krebs cycle or TCA cycle. या जो सेकंड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की, TCA साइकिल, यहाँ स्ट्रोमा में होती रहती है. और थर्ड स्टेप जो रहती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, टर्मिनल ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर in the head region of the oxysome, inner membrane के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते रहते हैं. Now the most important characteristics is there. This face of the inner membrane towards the outer chamber, this side is known as C side of the inner membrane, and the face of the inner membrane towards the inner chamber, this
side is known as M side. So क्वेश्चन में आस्क नीटमध्ये, एम्समध्ये किंवा MHT मध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. मे आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस साइड, M साइड एंड C साइड. M साइड में बहुत सारे F1 पार्टिकल तैयार होते रहते हैं और C साइड में F1 पार्टिकल नहीं है. M साइडलाच हे F1 पार्टिकल किंवा ऑक्सिसोम्स तयार झालेले आहेत. हे F1 पार्टिकल किंवा ऑक्सिसोम्स मोठ्या प्रमाणामध्ये तयार झाले. ते कोणत्या साईडला? M साईडला. अशा प्रकारचे हे अल्ट्रास्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे पॉईंट जे आहेत, याचं मायटोकॉन्ड्रियाची नंबर, त्याचा शेप आणि अल्ट्रास्ट्रक्चर. अल्ट्रास्ट्रक्चरमध्ये मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, स्ट्रोमा ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम एंड फंक्शन ऑफ द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम. इथेपर्यंत आपण बघितलेलं आहे. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में, एम्स में, MHT CET में, और ये फिगर भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए. लेबल द डायग्राम. सो दिस इज अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम. फिगर का नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम. परीक्षा में जब हम फिगर निकालते हैं तो फिगर के नीचे इसका नाम देना जरूरी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम. अब ये जो वीडियो है आप पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना. या पूर्ण व्हिडिओ बघितल्यानंतर, हा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्यानंतर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ, हा क्लास आवडलेला असेल तर याला सबस्क्राईब करायचं आणि लाईक करायचं विसरायचं नाही आहे. थँक्यू.